Continuing with the session on diabetes mellitus from pathology point of view, today we will discuss the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. First thing is, type 2 diabetes mellitus is a prototypic multifactorial complex disease. So there are multiple factors which are involved in it. Environmental factors such as sedentary lifestyle or the dietary habits with obesity, it plays an important role in the pathogenesis. Then in the monozygotic twin, there is again high concordance rate. So it suggests that there is a genetic basis for type 2 diabetes as well. If we see genomic wide association studies, then there are polymorphism in genes which are associated with beta cell function and insulin secretion. It has been found. Then in the pathogenesis, it is also you can see the association of transcription factor 7 like 2, which is present on chromosome number 10q. This transcription factor is involved in WNT signaling pathway. Okay, coming on to the next thing, that it uh, herein it is not linked with the genes which are involved in immune tolerance and regulation, like HLA genes, CTLA4 genes. These are not involved. यहाँ पर कोई HLA genes का कोई relevance नहीं है. CTLA4, PTPN22, these are not involved here. So इसका मतलब it is not an autoimmune disease. So it's very important that type 1 diabetes mellitus is autoimmune basis. While type 2 diabetes mellitus, it has genetic basis, but there is no autoimmune basis. There are two metabolic defects in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. The first one is the insulin resistance, that is peripheral tissue shows decreased response to the insulin. The second defect is the defect in the beta cell dysfunction. Okay, so it manifests as inadequate insulin secretion in face of insulin resistance and hyperglycemia. तो ग्लूकोज जितना है उतना इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है. दैट इज बीटा सेल डिसफंक्शन. यही दो आर इन्वॉल्व, जैसे कि हमने टाइप 1 में पढ़ा था, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर. हियर इन वी आर गोइंग टू डिस्कस टू इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस. वन इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड द सेकेंड वन इज द बीटा सेल डिसफंक्शन. Okay, starting with insulin resistance, we are going to discuss the relation of obesity with insulin resistance, and we will discuss 4 factors which are involved in insulin resistance. Okay, the first one is the NEFA. NEFA is non-esterified fatty acids. There is a relation between NEFA and insulin sensitivity. The fasting plasma NEFA level is inversely proportional to insulin sensitivity. That is, if your fasting plasma NEFA levels are very high, तो उसका मतलब insulin sensitivity will be very low. Now why is it so? So we'll discuss this. There are two main factors responsible for it. First one is, अगर NEFA ज़्यादा होगा, अगर नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड ज़्यादा है, तो उसके वजह से फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी ज़्यादा होगा. इट इज़ नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड. इसकी वजह से एक्सेस फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, क्योंकि फैटी एसिड ज़्यादा है. और उसके वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स होगा, लाइक डाई एसाइल ग्लिसरॉल एंड सेरामाइड. तो इंटरमीडिएट्स अगर ये वाले एक्यूमुलेट हो जाएंगे, डाई एसाइल ग्लिसरॉल एंड सेरामाइड, इट विल स्टिमुलेट द सेरीन थ्रियोनिन काइनेज. सेरीन थ्रियोनिन काइनेज को स्टिमुलेट करेगा. काइनेज को स्टिमुलेट करेगा तो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा. तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरीन रेजिड्यूज ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स. तो इंसुलिन रिसेप्टर्स के सेरीन रेजिड्यूज को वो फॉस्फोराइलेट कर लेगा, उसमें फॉस्फोरस ऐड कर देगा इस सेरीन थ्रियोनिन काइनेज. अगर वो इंसुलिन रिसेप्टर में उसके सेरीन रेजिड्यू में फॉस्फोराइलेशन कर देगा, तो इससे इंसुलिन सिग्नलिंग एटेनुएट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इंसुलिन सिग्नलिंग. तो दिस वे अगर नेफा ज़्यादा है तो इंसुलिन की सिग्नलिंग कम हो जाएगी, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी. द सेकेंड फैक्टर इज, अगर नेफा ज़्यादा है तो वो ग्लूकोज के साथ compete करेगा फॉर ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो वो ग्लूकोज के साथ compete करेगा फॉर ऑक्सीडेशन, तो उसके वजह से फीडबैक इनिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स हो जाएंगी, तो उसके वजह से ग्लूकोज में इम्बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, तो दे आर टू फैक्टर्स. बिकॉज अगर नेफा ज़्यादा है तो वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा,
उसकी वजह से इंटरमीडिएट्स बढ़ जाएंगे, फैट डाइसाइक्लिसरॉल एंड सेरामाइड जो सेरिन थ्रियोनिन काइनेज को स्टिमुलेट करेंगे, जो कि फॉस्फोरिलेट कर देगा और सेरिन रेजिड्यू ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर, जिसकी वजह से इंसुलिन सिग्नलिंग कम हो जाएगी। और सेकंड नेफा जो है वो ग्लूकोज के साथ compete करेगा फॉर ऑक्सीडेशन और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फिर वो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स को फीडबैक इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा। The second factor involved in insulin resistance is the adipokines. Adipokines are adipose tissues cytokines. Now, adipokines could be pro-hyperglycemic adipokines, मतलब वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएंगे, or could be anti-hyperglycemic adipokines, that means they wanted to decrease the glucose level. Okay, the example of pro-hyperglycemic adipokines are resistin and retinol binding protein 4. The example of anti-hyperglycemic adipokines are leptins and adiponectin. Now, how they act is they enhance the activity of AMP activated protein kinases, and these kinases they will decrease the insulin resistance. बट वॉट हैपन्स इन केस ऑफ ओबेसिटी, अगर कोई ओबीज होता है तो उसमें एडिपोनेक्टिन के लेवल कम हो जाते हैं। अगर एडिपोनेक्टिन के लेवल कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली द इंसुलिन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सो दिस इज हाउ एडिपोकाइंस आर इन्वॉल्व्ड इन इंसुलिन रेजिस्टेंस। द थर्ड फैक्टर इज इन्फ्लेमेशन। Adipose tissue, they secrete a variety of pro-inflammatory cytokines like TNF, interleukin 6, and these pro-inflammatory cytokines will increase the cellular stress. Now, this stress will stimulate multiple signaling cascades, and these are responsible for antagonizing the insulin action. So this is how inflammation will cause decreased in the insulin action or insulin resistance. The fourth factor involved in insulin resistance is PPAR gamma, that is peroxisome proliferator activated receptor gamma. It is a nuclear receptor and it's also a transcription factor. So whenever there is activation of PPAR gamma, so what happens, it will promote the secretion of anti-hyperglycemic adipokines like adiponectins, and we have already discussed कभी भी adiponectin is released, so उसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है। बट अगर PPAR गामा का म्यूटेशन हो जाए, अगर PPAR गामा का म्यूटेशन हो जाए और ये कम काम करना शुरू करे, so what will happen, it will be implicated in insulin resistance. So we have discussed 4 factors which are associated with insulin resistance. Okay, the first factor is the NEFA, non-esterified fatty acids. The non-esterified fatty acids have an inverse relationship with insulin sensitivity, because we all know that it causes fatty acid oxidation. The other one is that competes with glucose for oxidation. The second factors are adipokines, and we have discussed that in obesity there is less level of adiponectin, so insulin resistance increases. And the third factor we started is inflammation. With inflammation there is antagonize the insulin action, and the fourth factor is PPAR gamma mutation, and all of these 4 factors are responsible for insulin resistance. Now the second factor in the pathogenesis, that is beta cell dysfunction. We'll discuss this now. So initially insulin, it will be in a state of hyperinsulinemic state, that is insulin level ज़्यादा होंगे than normal, which will be a compensation for peripheral resistance. ठीक है, तो इंसुलिन लेवल इनिशियली ज़्यादा होंगे, बट इवेंचुअली जो होगा बीटा सेल और भी ज़्यादा डिसफंक्शन करेंगे, तो हमें क्या होगा, इवेंचुअली बीटा सेल कंपेंसेशन विल बिकम inadequate, and what will happen, the hyperglycemic state will become evident. Now there are 2 things. One is there is an intrinsic predisposition to beta cell failure. Intrinsic predisposition होती है इंसान के अंदर for beta cell failure, which exist and which have been proven by the allelic variants associated with TCF7L2 gene, which is a diabetogenic gene. तो उसके variants देखे गए हैं
which makes intrinsic predisposition for beta cell failure. Okay, and the second thing is there is amyloid replacement of islet cells, okay, which is seen in the individuals with long standing diabetes. तो उसके अंदर आइलेट सेल्स के अंदर अमाइलॉइड प्रोटीन जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, एंड द अमाइलॉइड प्रोटीन की डिपॉजिशन की वजह से इट लीड्स टू साइटोटॉक्सिसिटी, है ना, टू द आइलेट सेल्स. सो दिस इज अबाउट बीटा सेल डिसफंक्शन. If I show a diagrammatic representation, the obesity can lead to insulin resistance. Three factors are there: adipokines, free fatty acid, the NEFA, the inflammation, and all of this can lead to insulin resistance. Initially, the beta cells are normal. There is a normal insulin release, but with insulin resistance, the beta cell will do compensation. The insulin level will increase, but after some time, the beta cell, there will be, the compensation will become inadequate. There will be beta cell failure, and insulin will decrease, and the diabetes mellitus will become evident. So this was all about the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. We have discussed that it is a multifactorial disease. We have environmental factors, then we have genetic factors. We have seen in monozygotic twins and genome-wide association studies. Then I've told you it is not an autoimmune disease. There is no HLA involvement, no CTLA4. There are two main things, that is insulin resistance, and the second thing is beta cell dysfunction. Insulin resistance में मैंने आपको नेफा बताया है, adipokines बताए हैं, then I've told you inflammation, and I've told you PPAR gamma mutation. Then मैंने beta cell dysfunction बताया है, in which I've told you there is an intrinsic predisposition for beta cell failure, and also there is amyloid deposition in the pancreatic islet cell in a long-standing diabetes mellitus, and the amyloid cells, they are cytotoxic to the islets. Okay, so this is all about the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus, and this is all for today. Thank you so much.